And 30 30 seconds to go. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse searing through the sky. Magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। First stage performance normal. Here from the mission control center we can feel the vibrations of the launch. दोनों S-200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर। Generating a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum with S-200 motors thrusting currently. 1 minute. S-200 मोटर जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका एक मोटर का प्रणोदक करीब 200 टन का होता है। इस दौरान यह कुल 12,000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है और यह करीब 136 सेकंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind so that the launch vehicle structures experience lesser loads. The S-200s are 26 meters long and 3.2 meters in diameter, carrying 202.6 tons of propellant. अब कोर चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The core L110 and the two S-200 boosters all thrusting currently. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे S-200 का पृथक्करण। 200 stages are separated. जी हाँ, S-200 बूस्टर्स को सेपरेट कर दिया गया है तथा L110 या चरण प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। On your TV screens, the visuals from the onboard camera showing the separation event of the S-200 boosters. The L110 core stage alone currently thrusting. S-200 बूस्टर्स को जेटिसनिंग मोटर का प्रयोग कर बड़ी सावधानी से यान से अलग कर दिया जाता है। L110 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है वर्तमान में प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Slope guidance initiated. Shar, Bangalore and Trivandrum ground stations are currently tracking and the two major flight events have been completed. The separation of payload fairing and the initiation of closed loop guidance. यान की ऊंचाई 142 किलोमीटर। अब यह वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यान पूरी तरह सामान्य निष्पादन करता हुआ अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, यानी सेंसर्स की मदद से वह स्वयं का दिशा निर्धारण कर रहा है। Current altitude 163 kilometers. Plus 4 minutes. The L110 stage is powered by twin Vikas engines. The total burn time is close to 200 seconds.
यान पूर्णतः अपेक्षित पथ को अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Cryo stage is authorized. कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे L110 चरण का प्रज्वलन समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात L110 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। 110 stage thrust cut off and separated. C25 ignition commanded. C25 ignition confirmed. Several pieces of good news for the flight events. L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. The C25 cryogenic engine has started its operation. L110 चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अंतिम चरण जो कि C25 क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जा रहा है। +6 minutes. इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कक्षा की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी और अंतःक्षेपण किया जाएगा। 28.55 tons of propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. तृतीय तथा अंतिम चरण LVM-3 का क्रायोजेनिक ईंधन LH2 तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है। यह चरण बहुत ही जटिल C20 इंजन से बना होता है। इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है। इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है। यह चरण कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। The advantage of having cryo stage as upper stage is the high specific impulse of the propellant combination. Cryo stage performance normal. Having high specific impulse roughly means a lesser quantity of fuel being able to impart higher delta V or the velocity addition to the ongoing stage. +8 minutes. हर एक चरण के तंत्र विशेषज्ञ पूरी तरह रोमांचित रहते हैं जब उनका तंत्र पूर्ण निष्पादन कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Shah, Trivandrum and Bengaluru ground stations tracking in the meantime. The tracking of the LVM-3 OneWeb India 2 mission is carried out through a network of ground stations of ISRO Telemetry, Tracking and Command Network, ISTRAC, along the flight path. The trajectory and separation events are ascertained through the ground stations. For this mission, Sriharikota, Bengaluru, Trivandrum, Antarctica, Savalbird and Lucknow ground stations are participating. +9 minutes. To cater to the visibility between the Trivandrum and Antarctica ground station limits, a shipborne terminal is deployed to importantly view the cryostage operational regime and the separation of first and Cryo second batch stage of performance satellites. normal. For this particular mission, for about 43 minutes after the injection of the fourth batch of satellites, the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations. In the meantime, the data of the inertial navigation system is stored on board, and when the next ground station
cellular blood is starting to acquire the data. The confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered. OneWeb समूह का यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक समझौते के अंतर्गत यह दूसरा प्रमोशन मिशन है। इस समझौते के तहत 72 उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है, जिसमें से 36 उपग्रह LVM-3 M2 OneWeb इंडिया 1 मिशन के साथ उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं और आज OneWeb इंडिया 2 मिशन में अगले 36 उपग्रहों को प्रमोचित किया जा रहा है। यह OneWeb कंपनी के लिए 18वां प्रमोशन है। इससे पहले कुल 588 उपग्रह अन्य प्रमोशन यान से पहले ही भेजे जा चुके हैं। इस मिशन की सफलता के पश्चात OneWeb कंपनी प्रथम निम्न भू कक्षा वाले उपग्रहों के नक्षत्र का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही OneWeb उच्च गति कम विलंब वाली वैश्विक संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इसमें विश्व स्तर पर समुदाय, उद्यम, सरकारों को जोड़ने का यह सर्वप्रथम प्रदर्शन कर पाएंगे। न सिर्फ उद्यम बल्कि छोटे कस्बे, गांव, म्यूनिसिपैलिटी तथा स्कूल जैसी सुविधाएं जो कि दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर हैं, उन्हें जोड़ा जा सकेगा। यह मिशन न सिर्फ OneWeb के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। As we were mentioning earlier, the present mission is the second mission of OneWeb with ISRO in collaboration with New Space India Limited. The previous mission with LVM-3 M2 was the 14th mission for OneWeb and first with ISRO. The 36 satellites had then been placed in 601 km circular orbit, while for the present mission, the intended orbit is 450 km circular. Correspondingly, the relative velocity requirement at the time of injection is higher compared to the previous mission. The present mission LVM-3 M3 OneWeb India 2 is the 18th launch mission for OneWeb. वर्तमान में तृतीय क्रायो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल और अंतिम चरण प्रज्वलित है और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम उड़ान से 760 सेकंड आगे आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 465 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Plus 13 minutes. OneWeb is a global communication network powered from space, enabling connectivity for governments, businesses, and communities. OneWeb Gen 1 satellite constellation comprises of 648 individual satellites which are placed in low Earth orbit. India's Bharti Enterprises serves as a major investor and shareholder in OneWeb. As we told, this is OneWeb's 18th launch, its third this year. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ और यह दर्शाता है कि इसरो किस गुणवत्ता से, किस विश्वसनीयता से यह तंत्र का विकास कर इनका निर्माण किया जाता है और इनका निष्पादन पूरी तरह अपेक्षित। क्रायो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। For the present mission, the total burn time of C-25 is 632 seconds.
Plus 15 minutes. We are 15 minutes past the launch time. Cryogenic upper stage currently thrusting. तृतीय चरण C25 सामान्य निष्पादन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह इंजन इतना जटिल है और भारत इसमें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। अभी पुष्टि हुई, C25 इंजन को शट ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। The C25 stage thrust has been cut off, and now we are awaiting the correct injection parameters for the separation of the first and second batch of satellites. Plus 16 minutes. प्रथम चरण के 4 उपग्रहों की कक्षीय स्थितियां कुछ इस प्रकार होंगी। इसकी ऊंचाई 455.5 किलोमीटर के करीब और सापेक्ष गति 7.63 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। Today's launch will bring the total number of satellites in the constellation to 618. A major milestone will be achieved with the number of satellites now in orbit, enabling the global service. OneWeb will become the first LEO operator to reach this milestone of being ready to roll out its global coverage. वर्तमान में तृतीय चरण injection conditions are achieved. अपनी उचित अभिवृत्ति प्राप्त करता हुआ और कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे प्रथम समूह के 4 उपग्रहों का प्रमोचन। Cryo stage orienting itself for the separation event of the first batch of satellites, namely 1K, 3K, 5K and 7K. 30 seconds from then, the second batch of satellites, namely 2A, 4A, 6A and 8A will be separated. Plus 18 minutes. न सिर्फ इसरो के बल्कि OneWeb कंपनी के सभी लोग बड़ी उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनके उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे। Each satellite weighs 150 kgs and the cumulative payload mass for this mission is 5,805 kgs, including the satellite dispenser. Plus 19 minutes. कक्षीय स्थितियां प्राप्त हो चुके हैं। अब कुछ ही क्षणों में प्रथम 4 उपग्रह 1K, 3K, 5K और 7K का प्रक्षेपण होगा। One K, 3K, 5K, 7K satellites are separated. और यहाँ हर्ष का पल सबके सामने प्रथम 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अगले 30 सेकंड में अगले 4 उपग्रह 2A, 4A, 6A और 8 का अंतक्षेपण किया जाएगा।
Here, the Plus LVM-3 20 minutes. M3 OneWeb India 2 mission has injected its first batch. 2A, 4A, 6A, 8A satellites are separated. Visuals from the onboard camera confirming the separation event of the second batch of satellites 2A, 4A, 6A and 8A. जी हाँ, सफलतापूर्वक द्वितीय समूह के 4 उपग्रहों को अंतक्षेपित कर दिया गया है, 2A, 4A, 6A और 8A। यह सभी के लिए बहुत ही हर्ष का पल, यह मिशन अपनी सफलता की ओर। Current altitude is 457 kilometers. These satellites will eventually be maneuvered into the altitude of about 1200 kilometers. Plus 21 minutes. 12 orbital planes cumulatively contain 588 satellites that are active. Each orbital plane has a separation of 4 kilometers in altitude to avoid collision of satellites. ऑन बोर्ड कैमरा का यह विहंगम दृश्य जिसमें हम देख रहे हैं सैटेलाइट अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। अभी मिशन जारी है। अगले कुछ क्षणों में हम देखेंगे अन्य 4 उपग्रहों का प्रमोशन। इस दौरान तृतीय चरण पुनः कक्षा की स्थितियां प्राप्त करने के लिए उचित अभिवृत्ति प्राप्त करेंगे। अगले समूह के 4 उपग्रहों को प्रमोशन के लिए अब से करीबन 800 सेकंड की देरी लगेगी। The separation events are timed apart as 30 seconds and 800 seconds between alternate batches. The first and second batch of satellites have been separated. Now we are waiting the third batch of satellites. But in the meantime, the cryogenic upper stage will reorient itself and add velocity to get ready for the next separation. The first and second batch of satellites have been injected into 455 and 56 kilometers of altitude with a relative velocity of 7.628 kilometers per second. For the next batch of satellites, the stage will go to an orbit of 469 kilometers altitude, while the relative velocity will be 7.611 kilometers per second. इस मिशन में सभी 36 उपग्रहों को 5 चरणों में उनकी उद्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। क्रायो स्टेज के बंद होने के पश्चात प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। इसमें लिक्विड एपोजी मोटर्स की मदद से उचित अभिवृत्ति नियंत्रण किया गया और यान कक्षा प्राप्त करते ही अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह को प्रमोचित किया गया। अभियान द्वितीय चरण की ओर चल पड़ा है। इस कक्षांतरण में लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की जानी है और सापेक्ष गति 7.62 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी है। फिर पुनः उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर यान अन्य 4 उपग्रह के समूह का अंतक्षेपण करेगा।
इसके पश्चात तृतीय चरण का अंतक्षेपण प्रारंभ होगा, जिसमें 1A, 3A, 5A और 7A नामक उपग्रहों को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में 469 किलोमीटर तथा 7.611